हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज, एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर से। मेरी आवाज साफ आ रही है? यू एबल टू सी मी एंड हियर मी क्लियरली? या आई होप दैट्स ऑल राइट। सो हमने लास्ट सेशन में काफी किए थे क्वेश्चन। आई थिंक 15 16 17 सवाल किए थे। इन द डिस्क्रिप्शन यू विल फाइंड द लिंक टू द होल प्लेलिस्ट। अभी तक मैंने मोल कॉन्सेप्ट किया है और एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला पार्ट किया है, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, शैल वी गेट स्टार्टेड? लेट मी क्विकली चेक इफ यू आर एबल टू हियर मी एंड सी मी क्लियरली, एंड शुरू करते हैं। एटलीस्ट दिस वे आपकी प्रैक्टिस रहेगी एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव सवाल करने के लिए। नाउ आई नो मैं ये वीडियो नीट चैनल पे कर रहा हूँ, बट अगर आपने 11th स्टैंडर्ड फिनिश किया है, वेदर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर जेई की तैयारी कर रहे हो, एंड वी हैव फॉरगॉटन व्हाट हैपेंड इन द स्टार्टिंग चैप्टर्स, दिस इज गुड फॉर यू। अगर आप अभी जेई देने वाले हो, से एक अटेम्प्ट होगा दूसरे, तब भी आपके लिए यूजफुल है। सब्जेक्टिव एनसीईआरटी इज टॉप प्रायोरिटी इन केमिस्ट्री फॉर श्योर। द ओनली डिफरेंस इज कि मैं शाम को, बाय द वे, अराउंड 6:30 मैं जेई पे भी एनसीईआरटी करूंगा, बट एग्जाम्पलर करूंगा। तो अगर आप नीट के स्टूडेंट्स को और प्रैक्टिस चाहिए, कम देयर, ओके, ऑन द जेई चैनल आकाश बायजूस का एट 6:30 PM। चलो शुरू करते हैं। अभी लगता है मेरी आवाज तो साफ आ रही है, एंड यू आल्सो एबल टू सी मी क्लियरली। गुड इवनिंग भाग्या, तीर्थराज, कुमार, गौतम, सूर्या, न्यू फोक्स, पंपा एंड तीर्थराज, ऑल क्लियर। ओके, चलो पहला सवाल देखते हैं। Calculate the energy required for the process. You got helium plus ion. Okay, that becomes helium 2 plus ion plus electron. The ionization energy for the H atom in the ground state is given. This is interesting. So we are looking at the second ionization energy here. Second ionization energy. इसका क्या मतलब हुआ? ट्राई करो। What do you think? आपको क्या लगता है? Hey, Hare Krishna, King of my word. What's happening, Harshvardhan? How many questions can we expect from practical chemistry? सूर्या, एटलीस्ट एक सवाल। जेई मेन के पेपर में एटलीस्ट एक सवाल आया था हर शिफ्ट में। तो जेई एडवांस, आई एम सॉरी, नीट में हो सकता है दो भी हो सकता है, राइट? बिकॉज जेई मेन में थे 25 सवाल, आपके होंगे 50 सवाल, एग्जैक्टली डबल नंबर ऑफ क्वेश्चन, राइट? अगर उसमें आया तो इसमें दो आने के चांसेस है, राइट? जस्ट फ्रॉम दैट लॉजिक। अब एक्चुअली क्या हो किसको मालूम। You've joined Akash. That's great, Harshvardhan. All right. Let's try this question out. How do you start this one? Radhika, good evening. Rakshita, hello, hello. Wow, a lot of people. 98 percentile. Piyush, that's great, man. That's a great score. Why are you sad? I think that's a lovely, lovely score. What are you talking about, bro? Let's try this first question out. Yeah. Second ionization energy हमको निकालनी है. I know. आज सुबह तो काफी आपके जो दोस्त लोग जिन्होंने जेई दिया उनके लिए काफी हेक्टिक दिन था. In fact, I went live at 4:30 in the morning. It was an interesting experience for me. मैं पहले उतने समय कभी गया नहीं हूँ, एंड उस समय 150 लोग लाइव देख रहे थे, which was quite a big number. And wow, आप लोग तो सोए भी नहीं थे. Anyway, congratulations, Piyush. Brilliant score. Anyone from Haryana? Word साहब, हम तो हैं इस छोटे से इंटरनेट के कोने से, कहीं पे भी हो सकते हैं. That's the beautiful thing about online things. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. You will take PCM, Harshvardhan? That's all right, man. That's brilliant. How do you solve this question, guys? क्या हुआ? स्टार्टिंग ट्रबल? पहला सवाल ही लग रहा है आपको मुश्किल? What do you think? क्या लग रहा है इसके बारे में? ये सवाल मुश्किल लग रहा है क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना, आई थिंक ये डूएबल है। आपको क्या लगता है? ट्राई करिए, प्लीज ट्राई इट आउट, प्लीज ट्राई इट आउट। या उप्स, डिड समथिंग हैपन? नो, कुछ आवाज आई तो मुझे लगा कि कुछ डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, नेवर माइंड। ओके, क्या लगता है आपको? हाउ डू यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? कैसे शुरू करेंगे इसको? थोड़ा सोच के बताइए। दिस इज द 34th क्वेश्चन from the second chapter, इसलिए 2.34 लिखा है। From now on, I thought I'll start doing that, yeah, so that it's easy for you to find. बाद में अगर आप नोट्स देख रहे हो, कहीं और देख रहे हो कि भाई ये सवाल है कहाँ पूरे चैप्टर में, right? I mean, you should be able to figure that out anyway. If you've read the textbook, you'll know exactly यहाँ पे है। How do you start a question like this? Please कोई मुझे बताएगा, हेल्प करेगा। I think we can do these questions pretty quickly अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, है ना? खैर, how do you solve this? क्या करोगे इसको? Let me look at the chat. Hold on. Okay. 92 percentile, one sec. Kavita, take your time. Priyanshu, what's happening? Yeah. Exactly what I was saying. 11th standard C Priyanshu is preparing for JEE, but he's here because he wants to revise JEE ke subject question, which is great. Yeah. One sec. Okay, take your time. Okay. All right. What's the starting point you feel? I feel that, okay, you can write that the change in energy, right, is going to be equal to the infinite से लेके get it to first. That's the first ionization energy. ठीक है? पहला वाला ये हो गया. Okay. Then what do? You go from E1 to E2, right? That's what you got to do, right? Hold on, एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी की. This is not right. The reason why we're given He plus to He2 plus is because it resembles a
H प्लस आयन, मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दैट्स द ओनली कॉम्प्लिकेटेड थिंग हियर, ठीक है। उसके बाद आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ये आइडियाज जो भाई साहब ने बताए थे, क्या नाम था उनका, Rydberg's equation and all that, I can use those ideas mainly because of this. Don't get scared because this is second ionization energy. Okay, कुछ नई बात यहाँ पे नहीं हो रही है. Okay, delta E निकालना होगा second ionization energy. Sure, Piyush, I called it the second ionization energy, but it's not that complicated. It's not that complicated. King साहब, सवाल तो करिए. हेलो हेलो सबको बोलते रहेंगे हम लोग, हरे कृष्ण बोलते हैं, भगवान नाम बहुत अच्छा ले रहे हैं, but please क्वेश्चन भी तो सॉल्व करते हैं. That's what you're here for. Monoelectronic species. Yes, Priyanshu. So then I can just go ahead and use this formula, right? E is proportional to z square by n square. N equal to 1, z equal to 2. बस यही तो करना है आपको, right? If you want to do from first principle, ठीक है यार, सेम ही चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है. Okay, first principle से करने के लिए you will write down कि अच्छा ठीक है, delta E is going to be equal to, कहाँ है आप लोग? I've just changed my setup a little bit, इसलिए you keep seeing me looking left, right. It's a new camera here and screen भी अलग है. So anyway, your chat is right in front of me. अगर मैं नीचे देख रहा हूँ, I'm looking at your chat. If I'm looking up, I'm looking at the camera. That's what's happening. If you're wondering क्या हो रहा है. E1 की वैल्यू तो आपको मालूम है. It's negative 2.18 into 10 power minus 18, right? Negative क्यों? क्योंकि infinity से etc. ये सब basic theory है. I'm not going to revise that. If you want me to, I can. 0 minus this. But you have to multiply into क्या? Z square by n square. So into 4. That's all you've got to do. This number into 4. बस ना, और कुछ करना ही नहीं है. 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है प्रियांशु. तीसरा जो बोल रहे हैं वो सही है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आप बात कर रहे हो, राइट? सो हियर्स द डील, राइट? All you've got to do is multiply it with 4 because that's all you've got to do. Z square. And this is the answer. क्या हुआ दोस्तों? पंपा, thank you for that quick answer. किंग साहब, आपको टाइम आउट मिलेगा अगर आप टाइम पास की बात करोगे. यहाँ पे we are here to do, we solve questions. If you want to chat, do it on a personal time. Not here. Not here. All right. This is the right answer. Good job, Pampa. Yeah. What about the rest of you guys? Do you find this to be difficult? Yeah. Or is this direct? Teethraj, excellent, excellent going. Rakshita, what's up? What's up? I know. जेई का जो है तो ड्रामा चल रहा था, आई नो, सुबह. सो जेई का इंटरेस्टिंगली बिटवीन 3:30 to 6 AM इट वाज वर्किंग, देन उसके बाद जस्ट क्रैश. यस, गुड जॉब भाग्य, गुड जॉब. किंग ब्रो, यू आर गोइंग इन टाइम आउट. टॉलरेट करने की भी हद होती है. अगर आप टाइम पास करने वाले तो कहिए जहां कर रहे हैं, यहाँ तो नहीं होगा टाइम पास, ठीक है? दिस वाज द फर्स्ट एंड ओनली वार्निंग. ठीक है, लेट्स गो अहेड and solve the next question. Let's go ahead and solve the next question. ठीक है, let's pick up the speed right now. I give you enough time for the first one. ठीक है, starting में थोड़ा बहुत होता है. It's all cool. Good job भाग्या. तीसराज बहुत अच्छा है. पंपा, excellent work. Priyanshu, what you gave me was the value in electron volts. Priyanshu's thing 13.6. ये यहाँ पे जो दिया है जूल पर एटम दिया है, right? Now this is in electron volt. Same idea, but ठीक है. यहाँ पे जो एसेंस ये थे सेम करेंगे. चलो next question. 2.36. 2 into 10 power 8 atoms of carbon are arranged side by side. This is an interesting question. Side by side. Calculate the radius of carbon atom if the length of its arrangement is 2.4 centimeters. हां, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये कहां से आ गया? ठीक है तो है क्या? Did I get it from a different thing by mistake? Hold on, let me just check. Question number 36. यही है क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर का है? हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर का है. या वो जस्ट चेकिंग, एनसीईआरटी का एटॉमिक स्ट्रक्चर का है. ट्राई करो. तीतराज भाई साहब, there was a student by the name of Ashish Shekhar who got a score of 300 out of 300. I mean, वो रैंक क्या होगी उनको तो टाइम ही बताएगा, but it seemed like 300 out of 300 should be in the top ranks, no? Yeah, I'll share that with you guys on Telegram. All right, मैथ्स का क्वेश्चन एग्जैक्टली प्रियांशु करके दिखाओ. मैथ्स का सवाल एग्जैक्टली मैथ्स का ही सवाल है, इससे कुछ दिमाग लगाना नहीं है. You got to be really careful though. I would call it a sort of not really a solid state, but yeah, मैथ्स का सवाल. एक बहुत छोटी चीज आपको ध्यान रखनी है. Okay, if you arrange atoms side by side, what happens? You have a lot of atoms and then you have some more atoms. This whole distance is 2.4 centimeter. Now, what do you equate that to? Is equal to n times the carbon atoms times what? If there are, यहाँ पे n atoms है, then what? Okay, n is equal to 2 into 10 power 8 into what? What is this number going to be? ये क्या होगा? थोड़ा सोच के बताइए. 2.4 into 10 power minus 2, पंपा. That seemed like a very small number, right? But very big number. Do you think carbon का जो है radius 2.4 10 power minus 2 आएगा? पंपा, what do you think? Is it possible कि 2.4 10 power minus 2 यूनिट क्या है? पंपा मुझे थोड़ा यूनिट बताइए. यूनिट से डील करना है. एग्जैक्टली प्रियांशु. रेडियस का ध्यान. 6 माइक्रोमीटर से स्वती घोष. 6 माइक्रोमीटर. ओके, ये नंबर मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है. सी, इट्स गुड यू आर गिविंग मी सम मैथमेटिकल आंसर्स, बट थिंक, थोड़ा सोचो.
Does this number make sense? Can you get 6 micrometer as the radius of a carbon atom? कार्बन एटम का रेडियस तो एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए ना, 10 पावर माइनस 12 समथिंग, कुछ कुछ बहुत छोटा वैल्यू होनी चाहिए. आई डोंट, आई फील सो, राइट? बिकॉज यू रिमेंबर जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक्स पढ़ते हैं तो इसका जो है ऑर्डर होता है 10 पावर माइनस 15 न्यूक्लियस का, और रेडियस का होता है 10 पावर माइनस 10. ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं. तो जो आंसर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली एंगस्ट्रॉम के आसपास होना चाहिए. आई फील, आई डोंट नो, आई फील सो. ओके ओके. Yes, Tirthraj, what is that number? But are you sure it is that? Are you sure it is that? Piyush, 6 into 10 power minus 10. Okay, 0.6. Piyush बोल रहे हैं 0.6 angstrom. ठीक है. Now let me show you what Piyush has done is absolutely right. Priyanshu, सही बोला आपने. Diameter is 2 times radius. 6 nanometers says Rakshita. Okay, let's see. यही तो करना था यार. 2R है. That's all. After you do that, there's nothing else here to do other than you're going to need to take care of units. I've put centimeters 10 power minus 2. Why? Because 100 centimeter is 1 meter, है ना? तो हम लोग जो है यूनिट्स रखेंगे इस तरफ मीटर एंड इस तरफ है क्या, सो दैट हियर आल्सो वी विल गेट आर इन टर्म्स ऑफ मीटर. ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर. सो आर इज सिंपली गोइंग टू बी इक्वल टू दिस इनटू 10 पावर माइनस 10 व्हिच इज 0.6 एंगस्ट्रॉम. और आप बोल रहे थे 6 नैनोमीटर. 6 नैनोमीटर नहीं होगा ना. अगर देखो 0.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 है तो 6 इंटू 10 पावर माइनस 11 होगा. समझ रहे हो? तो 6 नैनोमीटर नहीं होगा रक्षिता. It will not be 6 नैनोमीटर. नैनोमीटर 0.06 नैनोमीटर हो जाएगा. समझा? समझ में आया? है ना? पंपा, आपने एक जल्दी में गड़बड़ी कर दी. डायमीटर या क्या पूछा है? डायमीटर पूछा क्या? रेडियस पूछा ना. What you get is a diameter. जो आप कैलकुलेट कर रहे हो is 2r. You need to divide by 2. Exactly, Tita. Yeah. Yes, Surya. Good job. Amazing. सही है. देखो हम लोग बहुत बेसिक चीजें कर रहे हैं, राइट? सो यूज दिस टाइम जुडिशियसली. ठीक है, इतना जो है बेसिक कोई नहीं समझाएगा. एटलीस्ट ऑनलाइन तो नहीं समझाएगा. मे बी रियल क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पीपल मे डू दिस प्रॉपर्ली. ऑनलाइन तो कोई इतना नहीं समझाएगा. सो टेक टाइम एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग आस्क मी राइट हियर. ओके, वी आर नॉट इन एनी हरी. वी विल फिगर दिस आउट, ताकि एक बार किया तो लाइफ में कभी भूलो ना ये सब चीजें. ओके, बिकॉज यूनिट्स एंड डायमेंशंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. उसी वजह से तुम लोग आगे पीछे भी कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस में जो 4 ऑप्शंस होंगे और 4 ऑप्शन में नॉट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं आएगा. बट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब गेट यूज्ड टू इट. ठीक है, इसमें लोग गड़बड़ी करते हैं. In Millikan's experiment, next question, number 39. Static electric charge on the oil drops has been obtained by shining X-rays. अरे वाह, क्या हो रहा है? You've got some sort of an oil drop. ये assume कर लो कि ये drop है. अरे drop क्यों नहीं बन रही हमसे? That's a drop. Beautiful drop. ये तो flame जैसा लग रहा है. ठीक है, ये है oil drop. और इससे क्या है? इसमें मैं डाल रहा हूँ X-ray. What does X-ray do? X-ray strips electrons of this. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स चले गए या फिर इलेक्ट्रॉन आ गए, जो भी है, तो इट हैज सम चार्ज. ओके, माइनस चार्ज, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स दे दिए. एक्सरे मतलब एक्सरे इलेक्ट्रॉन दे रही है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन इट. तो एक ऑयल ड्रॉप पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 कितने इलेक्ट्रॉन है, ये पूछा जा रहा है. मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मालूम है? किया है क्या कभी? लैब में किया है ना? 0.6. यस पंपा, तीर्थराज, देवांशी, गुड जॉब, गुड जॉब. रक्षिता, फाइनल आंसर यस तीर्थराज, दैट्स ग्रेट. First question of this class, Surya. We'll go back to the first question in the end. Surya, we are past that right now. We spent a lot of time on the first question. Surya, at the end, Surya. Abhi catch up on what's going on right now. Yeah, we'll do that in the end. Surya, please remind me. बिल्कुल end में जरूर करेंगे. Divide by charge of electron 1.9 into 10 power minus 19, 0.7 something. Use a calculator. It's okay. In questions के लिए please use a calculator. I don't expect you to do it without it. ओके, आई नो नीट में कैलकुलेटर नहीं है, बट देखो हमारा फोकस है फर्स्ट प्रिंसिपल पे. हम लोग सब्जेक्टिव सवाल कर रहे हैं एनसीईआरटी के. अगर कैलकुलेटर की जरूरत है यूज करो, डोंट वरी अबाउट इट, कोई टेंशन नहीं है. 81. ओके, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 81 सीम्स लाइक अ रीजनेबल नंबर. 0.7 नंबर नहीं हो सकता ना रक्षिता, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. इफ यू आर सेइंग इट्स 0.5 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. इफ यू आर सेइंग 5.5 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन है. आई एम आस्किंग फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? करेक्ट. ओके, थोड़ा सोचो. Tenshi, I haven't seen you here before. Welcome to the channel. And Surya and Tenshi are giving me the answer as 8. Okay, lovely. ठीक है, क्या करना है हमको यहाँ पे? Charge is this. Simply इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम. सही बोला. Ne times this charge, मतलब n is 1.6 into 10 power minus 19. Take it to the other side. Yeah, 16 into 8 कितना होता है? कैलकुलेट कर लो. सब लोग 8 बोल रहे हो ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ. 8 6 48, 4 gets carried over, 108. अच्छा, ठीक है, तो इसके आसपास ही है, क्योंकि 16 into 9 कितना होता है? इट्स गोइंग टू बी अ लॉट लार्जर. 16 into 9 is 124. एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हुई यहाँ पे. ये क्या हुआ? मैंने कुछ 16 into 8 गलत किया क्या? लगता है गलत किया. 6 8 48, 4 गए, हाँ 128. ये देखो, ये गलत किया. 128 और 16 मतलब 144,
है ना। तो 128 इज प्रीटी, अरे यही तो है 128, ये तो है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन राइट आंसर, गुड जॉब पीपल, 8 इलेक्ट्रॉन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पीयूष देखा ना, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तीसरा ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्योंकि कोचिंग में कोई पढ़ाता ही नहीं है, अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है क्या? तीसरा, यू नो व्हाट मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज? वंडरफुल। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होती क्या भला है? व्हाट इज मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट? Does anybody know? I'm trying to open up BYJU'S का amazing resource to show you. Millikan's oil drop experiment. BYJU'S. Yeah, I'm trying to see. Let's see if we can get a video of this. If you can't get a video, I feel that we have a beautiful video about this. हम लोगों ने 11th 12th में तो बनाया है, वीडियो पे से बनाया है for sure. But until I find that video, here is a small experiment from our beautiful site. Yeah, here you go. You want to read about Millikan's oil drop experiment? Here it is. Okay. फिजिक्स में भी है, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छा है तो है, बहुत अच्छी बात है। I feel that like there's a video around this. I'm just gonna take about 10-15 more seconds to find a video around this. अगर मुझे वीडियो नहीं मिलता है, then I'll go ahead and just continue anyway. Physics 2, physics high, a lot of physics people. Oh, that's beautiful. I found a video by a person who I respect a lot. He's an awesome guy. Check it out. Tyler Dewitt. We made chemistry video with him. I don't know if you'll ever see those videos, but one of the most wonderful chemistry educators has made a video on this. You can check it out later. Okay, I've given you some explanation on Millikan's oil drop experiment. Basically क्या होता है कि there is some experiment जिससे you put X-rays on an oil drop, and इसी से निकला था कि चार्ज क्या होता है. You get a charge by mass ratio of stuff. Now it turns out that this charge by mass ratio is constant, and इसलिए electron is a fundamental particle was figured out. ये थोड़ा theory है. I don't want to spend too much time on this because हम लोग subjective सवाल कर रहे हैं. If we were doing a theory question, maybe theory हम लोग कर रहे थे डिटेल में, then maybe I would have spent time on this. खैर वो वीडियो देख लेना, टाइलर का वीडियो बहुत सही है, और उसके अलावा मैंने जो आपको बायजू का वो दिया वो भी बहुत सही है, कोई भी देख लो, ठीक है। Yes, all right, awesome, Priyanshu, thanks for the input. To find Avogadro number, Swatit, all right, beautiful, very nice input. Beta rays to find charge of one electron. Cathode rays मतलब beta rays, yeah, sure. Nice, good, कोई सब चीजों का आइडिया। Symbols 79 bromine 35 and 79 Br can be written, whereas these symbols are not acceptable. Answer briefly. ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही है क्या? मुझे लग रहा है ये तो पीरियोडिक टेबल का है। एक बार फिर से चेक करते हैं। क्वेश्चन 241। हाँ, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का, मुझे लगा पीरियोडिक का है, बिकॉज माय नेक्स्ट सेशन विद यू पीरियोडिक टेबल में उसके भी सवाल बना रहा था, मुझे लगा कुछ इंटरचेंज हो गया, बट नहीं, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही सवाल है। ऑलराइट, तीर्थराज, we'll talk later if you want, but check these out. ये रिसोर्स देख लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मास नंबर ऊपर, बट क्यों, बट व्हाई? ओके, ठीक है, मास नंबर ऊपर, प्रियांशु बोलता है मास नंबर ऊपर और ये नीचे, ठीक है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्रियांशु सेइंग, मास नंबर ऊपर, ए यानी कि मास नंबर, है ना, और जेड यानी कि क्या, एटॉमिक नंबर, है ना, एंड ऑल्सो विच इज ऑल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन अनचार्ज स्पीशीज, राइट। ऑलराइट, ठीक है, so I can either write it as this or as this. इससे कंपेयर करो तो ये बन जाता है, बट ये क्यों नहीं चलेगा? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? इन दोनों प्रॉब्लम क्या है? 10th ग्रेड क्वेश्चन भी नहीं है, हाँ, बट एनसीईआरटी में है, तो लेट्स डू इट, है ना, बिकॉज ऊपर पावर मास एंड लोअर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट्स व्हाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऊपर पावर मास नंबर, व्हाट इज पावर मास? पावर मास का मतलब वही, डज पावर मास मीन द सेम? आई हैवंट हर्ड द टर्म बिफोर। ओके, 8th ग्रेड में किया था आईसीएसई में, दैट्स ग्रेट प्रियांशु। But why can't we write this? Okay, great, you figured it out. Why can't we write this? ये वाला तो ठीक है, this feels random, तो ये तो नहीं लिखेंगे। Why don't we write this? This is confusing, ठीक है, इसको हटा दो। But what about this? Yeah, the problem is if you write 35 Br, first of all it's not standard, लोगों को लगेगा कि ये मास है, और अब बोलोगे नहीं, but atomic number है, but you're not specifying which isotope. If you're saying that this is the atomic mass, you don't know which isotope, so this is not a good way to do it. Even in this, in fact, when you put this, you know what isotope you have. Okay, 79 है, 81 है, whatever. You know which isotope I'm talking about. By putting this number, I don't know which isotope. ठीक है, that's why I chose this question. What is the problem with this? Let's identify that now. ठीक है, basics वाले हमको आना चाहिए, but why? Why don't we do this? Why don't we just specify this? Because there are different atoms that have different masses of the same element, isotopes. ठीक है, अगला question करते हैं. Let's do the next one. An element with mass number 81 contains, this is a wonderful question, 31.7% more neutrons as compared to protons. Assign the atomic symbol. This also I feel is a 10th grade question. ये भी 10th grade में अगर पीरियोडिक टेबल होता आपके लिए तो होता। आजकल मैंने सुना है पीरियोडिक टेबल हटा रहे हैं क्या 10th से, 10th या 9th से जब भी था हटा रहे हैं। खैर, ट्राई दिस आउट, इसको ट्राई करो।
Exactly, Priyanshu, exactly. Swadeep, perfect, perfect. Yes, same question. Yes, Rakshita, thanks for your input. Surya, all right, Piyush. Yeah. How do you do this one? How do you start this question? This is interesting. थोड़ी सी मैथ्स में लगेगी. This question and next question, little bit of effort लगाना पड़ेगा आपको. The main thing is forming the algebraic equation. Priyanshu, thank you. That's the first one that I want you to do. P plus n is 81. Okay. That is equation 1. What is your second equation? Because if you have two variables, here I have two variables, I need two equations. Basic idea maths का. I know आप लोगों को maths पसंद नहीं है, but algebra का idea ठीक है. If you have two variables, you need two equations so that you have a single solution. Otherwise, you have infinite solutions. वो होता है ना family of curves जो भी होता है maths में पढ़ाते हैं, वो सब में बात करेंगे. But you need two equations so that I can solve for these. I can get exact values. What is my second equation? P by n का ratio. ठीक है. क्या करेंगे प्रियांशु? What is the mathematical equation of that? Can you tell me? P by n का ratio. ठीक है. But maths क्या होगा उसका? Can you tell me that? Yeah, sure. So help me with that. Help me form the equation. Okay. So Piyush is saying neutron is P plus 37% of P. So 37% मतलब 37 by 100 into P. Do you guys agree with him? Well, 31.7 मैं समझ गया. 31.7 मतलब 317 by 1000 है ना, वही है. ठीक है, करेक्ट. या डू यू गाइस एग्री विद पीयूष? शुड वी गो अहेड विद दैट? जो पीयूष ने बोला ये इक्वेशन ठीक लग रही है या नहीं? अगर किसी को इक्वेशन में डाउट है तो बता दो, है ना. व्हाट हाउ डू वी अराइव एट दिस? 31.7 more neutrons as compared to protons. ठीक है. So what we have done essentially is saying कि P है प्रोटॉन, तो और इसमें हो जाएंगे 31%, 31 by 7 by 100 into this value एक्स्ट्रा हो जाएंगे. If you add this many particles, you get neutrons. यही इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है. Yeah, exactly. तीर्थराज 31.7, not 37, but yeah, 1.317 P. Exactly, Priyanshu. Pratiti, all right, great. So these are two equations. अब solve करो यार, अब क्या बाकी है? Please solve. ठीक है स्वतीप, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल एक्सप्रेशन. थोड़ा सॉल्व करो. अगर इससे करना, आई थिंक दिस यू कैन डू विदाउट अ कैलकुलेटर. मतलब यू कैन काइंड ऑफ गेट टू इट, बट ठीक है, अगर यूज करना है तो कर लो कैलकुलेटर. आई डोंट माइंड इट. इफ यू वांट टू यूज अ कैलकुलेटर यू कैन, नो प्रॉब्लम. आराम से करो. ट्राई दिस आउट. ये थोड़ा मैं ज्यादा लेफ्ट में चला गया. लेट मी फिक्स माय सेल्फ. ओके, दिस इज बेटर, राइट? ओके, या कूल. प्लीज सॉल्व एंड लेट मी नो क्या होगा इसका आंसर. राइट, सो ऑल आई हैव गॉट टू डू नाउ. या 1.317 क्या बोल रहा है? ठीक है पंपा, यू राइट. पंपा तीर्थराज, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. पीरियोडिक टेबल से. पीरियोडिक टेबल भी यूज मत कर रहा प्रियांशु. अभी करोगे तो चीटिंग हो जाएगी. पीरियोडिक टेबल मत यूज करो अभी. या यू कैन यूज द पीरियोडिक टेबल टू गेट द आंसर. यू कैन, श्योर. Just fixing my position. Okay, cool. Yeah. Mass number 80. Priyanshu working backwards. Smart. बट पीरियोडिक टेबल हमेशा हाथ में होती नहीं है. ब्रोमीन का होता है प्रियांशु. ऑल राइट, ठीक है. यस तीर्थराज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी देयर? लेट्स नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस. योर गाइस आर एब्सोल्युटली राइट. पी इज 81 by 2.31, 35. प्रियांशु ऑलरेडी क्रैक कर लिया. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद दिस. ओके, सो नाउ फाइनली व्हाट इज द एटॉमिक सिंबल? यू विल राइट ब्रोमीन, यू विल राइट 35 and you write 81. You see, the questions are building up. So NCERT is beautiful that way. पहले बहुत सिंपल सवाल किए, धीरे धीरे दे बिल्डिंग अप द लेवल. बहुत धीरे धीरे, आराम से, वेरी ग्रेजुअल स्टेप्स. इन दैट वे एनसीईआरटी इज अ वंडरफुल बुक. आई नो एनसीईआरटी कभी कभी भारी लगती है आप लोगों को, अरे क्या क्या थ्योरी दे दी. बट इफ यू डू द क्वेश्चन, स्पेशली द एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, धीरे धीरे बिल्डअप होता है. यू सी, वेरी वेरी स्लो बिल्डिंग अप ऑफ क्वेश्चन, राइट? व्हाट वी डिड विद दैट, दिस इज द आंसर टू दिस वन. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. एक्सीलेंट. चलो एक और, वन मोर. दिस वन गेट्स वेरी फैसिनेटिंग. It's why as बोला धीरे धीरे build-up होता है. This is the next build-up of this one. An ion with mass number 56 contains 3 units of positive charge and 30.4% more neutrons than electrons. Assign the symbol to this ion. इसको करो. We can do that in JEE MCQ, but these questions never come. Priyanshu, ट्रस्ट मी ऑन दिस. तुम इसको करोगे तो मुझसे जेई एमसीक्यू बहुत आसानी से हो जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है. ओके, इफ दे गिव जेई द वे दे डू, अभी जो दे रहे हैं, अब तुम आराम बहुत ही आसान से कर लो. इट्स गोना बी नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. समथिंग दैट्स देयर ऑन दैट साइड. देयर इज अ वियर्ड लाइट फ्रिंज इफेक्ट देयर व्हिच आई विल फिक्स लेटर ऑन. ओह, वो लाइट आ रही है बाहर से, सूरज की रोशनी आ रही है. ब्रो कहां से आ रही है लाइट? दिस इज इनसेन. आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट.
There's a weird reflection. I can't figure out where it's coming from. Anyway, never mind. There's like this in my corner, that thing there that you see. Trying to figure out what that is. Never mind. You can't see it. You probably don't care. Anyway. Yeah, Rakshita, these are all NCERT questions. So you praise NCERT. P minus E is equal to 3. Okay. Okay. So what are the equations we're going to make now, Priyanshu? Can you tell me now equations kya hongi? Equation number 1. Mass number is 56, which is P plus N. Okay. Now, 3 units of positive charge. Okay. So P is equal to E plus 3. P is equal to E plus 3. Yes, Priyanshu ने भी यही चीज बोली. Same चीज. Fe. ठीक है. That's good. Fe 3 plus लग रहा है. Priyanshu, that's great. You have guessed it right, but can we get there with some maths? Piyush, बहुत अच्छा guess किया आपने. It's a very good guess. You don't know this question? Surya, do this from scratch. Surya हम लोग कर रहे हैं. We'll do this. इसलिए तो हम हैं यहाँ पे. Let's form the equations one by one. Are you comfortable with this equation? We have formed equation 1, equation 2. Just give me a thumbs up in the chat if you're okay with the first 2 equations. तीसरा वाला तो हमने पहले ही just किया था. Okay. तीसरा वाला में the only difference is कि I will say that okay, their electrons plus same चीज है 30.4 by 100 into electrons is equal to proton, not proton, sorry, is equal to neutron. यहाँ पे last time हमने proton लिखा था, this time doing electron. That's all. Are you okay with these 3 equations? Any doubts in these 3 equations? Anything weird जो मैंने किया है जो आपको नहीं समझ में आया बता दो. पीयूष is good. सूर्या comfortable लग रहा है? देखो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था. वी सेड दैट प्रोटॉन्स से ज्यादा होंगे न्यूट्रॉन्स. यू सीन दैट दिस थिंग ना कि कभी कभी सी इन हाइड्रोजन देयर आर नो प्रोटॉन्स. हीलियम में सॉरी इन हाइड्रोजन देयर आर नो न्यूट्रॉन्स. हीलियम में 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है ना. सही बोला गलत बोला? अजीब लग रहा है. सही है क्या? हाँ सही है. ठीक है सही है. देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इट सो हैपेंस दैट इट इज वेरी वैलिड कि न्यूट्रॉन्स कैन बी मोर देन प्रोटॉन्स. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा. किस इलेक्ट्रॉन से? चार्ज स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन से. इसीलिए ये 3 इक्वेशन अलग अलग लिखनी पड़ रही है. दिस इज टॉकिंग अबाउट 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स. एक मिनट. 30 मोर प्रोटॉन. हाँ ठीक है. दिस इज फाइन. दिस इज ओके. ठीक लिखा है. कूल. इजी. सो पंपा. लवली. पंपा हैज गॉट इलेक्ट्रॉन्स टू बी 23. गुड जॉब पंपा. एग्जैक्टली यही करना था. थैंक यू. सही है. मास इज 4. कुछ लगता है कुछ उधर हो गया, आगे पीछे हो गया. पंपा गुड जॉब. एनीबडी एल्स? यस तीर्थराज 56 इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन. दैट्स इक्वेशन 1. सूर्या भाई बताओ कुछ समझ में आया या फिर कुछ अजीब लग रहा है? सो राइट ऑल दीज इक्वेशंस डाउन. इक्वेशन 3 प्लस चार्ज है. प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रल में चार्ज स्पीशीज में होंगे. P माइनस E इज इक्वल टू 3 जैसे आपने बोला था. दैट वाज इक्वेशन 1. दिस इज इक्वेशन 2. दिस इज इक्वेशन 3 है ना. I can write P plus E, sorry, I can write E plus N as 53 or I can write P plus N as 56. It's the same thing, है ना. Same ही चीज़ है दोनों. Because I've used this equation to go there. The last one, this is the equation that gives you the actual number of electrons जो हमने किया था. N को substitute 56 minus P and you directly get E in terms of protons. यहाँ पे 3 आपको इस तरफ add करना था, right? So you get 2.3 E is 53. And then E you get to be 23, proton is 26. Okay, so symbol obviously is going to be Fe3 plus, which you guys have figured out already. Yeah, absolutely. ठीक है. Yeah, exactly, Teethraj. Yeah, so great job, Devanshi. Yeah, exactly, Pampa. Yeah, absolutely. Surya, cool. All right, good. आगे बढ़ा जाए. Nice question, right? ये आप कर पाए because you knew it was Fe. What if they give you some random thing like जिसमें जो 68 electrons होंगे or something like that? कुछ F ब्लॉक एलिमेंट दे देंगे, कैसे करोगे, है ना. तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि फोकस ऑन द प्रोसेस, राइट. हमेशा मैं बोलता रहा हूं जब स्टूडेंट्स जेई की भी तैयारी कर रहे थे, मैं बार बार प्रोसेस में फोकस करो. ये सवाल डायरेक्टली नहीं आएगा आपके जेई और नीट में, बट इसके बेसिस पे सवाल आ सकते हैं. ठीक है. अगर आपने इस टाइप का सवाल पहले प्रैक्टिस किया है, देन एट द टाइम ऑफ नीट और जेई आप जल्दी से कर लोगे. अगर प्रैक्टिस नहीं किया है, उस समय पैनिक आ जाएगा, लाइक अरे आई डोंट नो हाउ टू डू दिस. ऑल्दो इट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अगर पहले नहीं किया तो मुश्किल लगेगा. That's the goal. We're trying to just do things आराम से. Next question. Nitrogen laser produces a radiation at a wavelength of 337.1 nanometer. If the number of photons emitted is some number, calculate the power of this laser. 46 questions. All right. Good job. Pampa, Swatit, Teethraj, Bhagya, Piyush, Devanshi, Priyanshu. Great. Awesome. Try this question out. Simple question again. Yeah. Physics का ही लग रहा है सवाल तो. एक लेजर है जिसमें कोई रेडिएशन निकल रहा है.
नंबर ऑफ फोटॉन्स, मॉडर्न फिजिक्स में भी यही सेम चीज होती है ना. दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. इफ यू डू मॉडर्न फिजिक्स and you do atomic structure, you're sorted, bro. You get 2-3 questions straight away. Similarly, agar aap thermo karo in both physics and chemistry, again you get like 3-4 questions. It's a lot of questions to get for free if you're just doing these things, है ना. क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है ना. E is hc by lambda times n, क्योंकि लेजर से कुछ इसमें इतने ढेर सारे फोटोन निकल रहे हैं. इसको दिस इज दैट नंबर. वेवलेंथ ये है, वेवलेंथ यहाँ डालो. एनर्जी कितनी होगी, दिस इज द पावर. या energy per time is power. Take time to 1 second. That's it. Very simple, very straightforward question. They're like one of those easy questions in between a slightly more tricky ones. एक दो बहुत simple सवाल आ जाए. This is one of those. Let's do this. Yeah, exactly. Try करो इसको. All right. Cool. E is equal to NHC by lambda. Yeah, Pampa. Exactly. Let's do this. 205 into 10 power 12. Okay. 205 into 10 power 12. Says Piyush. ठीक है. Let us see. So कैसे करेंगे? Let's substitute 6.6 10 power minus 34, 5.6, 3 and 3.37. So calculator निकालना पड़ेगा. Let's figure out the exponents पहले. 34, 24 मतलब -10. मतलब -2. नहीं, हमको दूसरी तरफ जाना है. सही कर रहे हैं. -2 हो गया. ओके. -10 -2 और ये ले गए तो +5 हो गया. 10 पावर 12 कैसे हो रहा है? तुम्हारा पावर 14 आ रहा है तुम लोग का. अच्छा, मेरा कुछ अजीब चीज आ रही है. डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? मेरा तो +5 आ रहा है, पावर 5 आ रहा है. व्हाट डू यू थिंक? 10 पावर 14 होगा, पावर 14 होगा पीयूष. अच्छा, देखते हैं. लेट्स विल सी. खैर, आई हैव गॉट +5. विल सी, देख लेंगे. 3 into 5.6 into 6.6 by 3.37. अप्रॉक्सीमेटली इसको ले लो 2. आई नो, कर लो यार, डू विद एन एक्चुअल कैलकुलेटर, बट आई एम ऐसी अप्रॉक्सीमेट मैं कर रहा हूं. आप लोग कैलकुलेटर से करना. 2 into 3, 6 into 6. 6 into 6 is 36 approximately. So what I am getting is approximately 3.3 into 10 power 6 is what I am getting. आप लोग को 200 पावर 14 लग रहा है. पावर 14 लग रहा है. ठीक है, देखते हैं. I am getting this from my very crude calculation. I am getting 10 power 6. How are you getting 10 power 14, Piyush? पंपा तीर्थराज क्या हो रहा है? नैनोमीटर में है. हाँ. स्वतीत ने पकड़ लिया. 337 नैनोमीटर में है. तो आई थिंक व्हाट यू हैव टू डू, अगर 337.1 नैनोमीटर हुआ, व्हाट इज दैट? दैट इज इनटू 10 पावर -9 मीटर. ओके. और अगर मैं इसको यहां पे ले जाऊं, इफ आई डिवाइड बाय 100, I have to multiply by 100 also. So divide by 100, I get 3.37 into 10 power -7. यही मैंने किया है. Nothing fancy. That's why I wrote 10 power -7. है ना? 330. Teethraj has used a nice calculator. 333,178. हाँ, सही है. Exactly 3.3 आ रहा है आपका. बढ़िया है. मैंने तो स्कैम किया. मैंने कुछ ठीक से कैलकुलेट नहीं किया. बट स्कैम करने पे और ठीक से कैलकुलेट करने पे वही सिमिलर आंसर आ रहा है. 10 power 6 जूल पर सेकेंड. जूल पर सेकेंड तो मतलब पावर हो गया ना. What is power? Power is what? Funny. Yeah. It is energy per unit time. Yeah. If this is ml2t minus 2, power should be ml2t minus 3. Is this correct? कुछ अजीब लग रहा है तो बता दो. Analyze करो and do all these small things in your head. You know, ये जरूरी है. So what is the dimension of power? I know it sounds funny. ml2t minus 2. ml2t minus 3. देखो सही लिखा. And just check, just do these small things. No calculator? रक्षिता ले आओ यार, फोन है तुम्हारे पास. क्या नो कैलकुलेटर? एवरीबडी हैज अ फोन. फोन पे कैलकुलेटर होगा ही. क्या नो कैलकुलेटर? अरे ठीक है, आइए ना कंप्यूटर पे भी कैलकुलेटर है. जस्ट प्रेस विंडोज आर और कैल्क खुल जाता है कैलकुलेटर. कर लो यार. मेरी क्लास में प्लीज अगली बार कैलकुलेटर लेके आना. ठीक है? लाइफ विल बी इजियर दैट वे फॉर सम ऑफ दीज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. अगला सेशन तो पीरियडिक होगा, उसमें नहीं चाहिए होगा, बट ठीक है, एटॉमिक में और बाद में जब हम फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे लेके आना. तीसरा करने की जरूरत नहीं है. मैंने तुमको बताया ना शॉर्ट में कैसे करना है. शॉर्ट में आई टोल्ड यू हाउ टू डू. शॉर्ट में मैंने बताया वो कैसे करना है. जैसे अगर ये नीट में आ गया तो ऑप्शन आएंगे. तो हाउ विल यू सॉल्व दिस? देखो ये 3.37 by 6 आ रहा है. मैंने दोनों कैंसिल कर अप्रोक्सीमेटली 2 लिख दिया. ठीक है. फिर मैंने ये बोला, क्या बोला? 3 into 2. ये 3 into 2 हो गया 6. 6 into 5.6 हो गया कुछ 33. यही है ना? दैट इज व्हाट आई डिड. दैट्स ऑल आई डिड. 6 into 5.5 हुआ 33. into 5.6 मैंने 33 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 नहीं होना चाहिए, 2 थोड़ा कम होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा आगे पीछे करके अप्रोक्सीमेट किया मैंने.
गलत सवाल, इट्स ओके पीयूष, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, अभी ठीक है ना। नोकिया, अरे वाह, अरे हर्ड समथिंग रियली सैड एट HMD इज गोइंग टू बी रिटायरिंग द नोकिया ब्रांड। वो लोग अपना खुद के नाम से HMD बेचेगा। HMD ग्लोबल इज दैट कंपनी जो आई थिंक फिनलैंड में है, राइट? सो दे गोना स्टॉप नोकिया, दे गोना सेल देयर ओन ब्रांड। थिंग्स चेंज सो फास्ट। अगला सवाल देखते हैं। तो वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एटम इज 1.9 eV। शुरू हो गए सवाल। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ and threshold frequency of the radiation. What is this? This is photoelectric effect. If the cesium element is irradiated with a wavelength of 500 nanometer, ये क्या है? This is incident radiation. Okay. Calculate the kinetic energy and the velocity of the ejected photoelectron. यार कैलकुलेटर करना पड़ेगा, इसके बिना कैलकुलेटर ये वाला नहीं होने वाला। रक्षिता ले आओ। प्रियांशु, yes, exactly. E minus E naught equal to KE. Okay, sure. E minus E naught equal to K. What I like writing it is like this. Same cheesy. I write saying कि E is H nu, right? Which is equal to H nu naught plus half mv square, right? So if you plot kinetic energy versus nu, you get this. This is nu naught, है ना? This is how I remember. तो पूरा ग्राफ, पूरा फोटोइलेक्ट्रिक एक जगह खत्म हो गया. And this is. एग्जैक्टली तीर्थराज, वही तो मैं बोल रहा था आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सेम ही तो है, कुछ अलग नहीं है, बस एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑल दैट। बट उसके अलावा क्वांटम का तो हम लोग बहुत कर ही चुके हैं सवाल ना लास्ट टाइम, और क्वांटम के सवाल नहीं कर रहे हैं हम लोग, कर लिया लास्ट टाइम। वी आर डन विद क्वांटम वाला स्टफ। इसको ट्राई करते हैं, ठीक है? लेट्स ट्राई दिस। 652 नैनोमीटर थ्रेशोल्ड। पीयूष, थैंक यू, दैट वाज वेरी क्विक। इट्स ओके सुल्ताना, ट्राई दिस क्वेश्चन आउट। थैंक यू, बहुत जल्दी करते हुए। ओके। सो कभी कभी ये वर्क फंक्शन को फी या फिर फाई भी लिखा जाता है, ठीक है? सो विद दैट आइडिया आई कैन राइट द सेम थिंग डाउन। फाई इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, व्हिच इज HC बाय लैम्डा, सॉरी HC बाय लैम्डा। और ये क्या है? मैंने मल्टीप्लाई किया इनटू E, व्हिच इज 1.6 into 10 power minus 19, दैट्स द चार्ज राइट हियर। ओके, इसलिए मल्टीप्लाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया। कूल, व्हाट आई हैव गॉट इज द राइट आंसर, इसलिए आई एम मूविंग अहेड। सॉरी, मेरे सर के ऊपर आ गया। 652 nanometer threshold, Piyush, fast bro, very fast, lovely, like it. So अगर ये मिल गया 652 nanometer, now look at what is happening. First principle सोचो, ठीक है? अगर इसकी वैल्यू 652, 651 जितना भी आ गया, मैंने कैलकुलेटर से किया है, 651 आ गया, ठीक है? और बोला है कि 500 नैनोमीटर की एनर्जी आ रही है। What does this mean? What does this mean? Will there be a photoelectron or not? What is a photoelectron? This is a photoelectron. This is H nu, strikes and निकलता है इलेक्ट्रॉन with some energy, kinetic energy. So because the wavelength is lower, मतलब एनर्जी होगी ज्यादा। So lambda 500 radiation, energy of lambda 500 is going to be greater than energy of lambda 651, है ना? क्योंकि this is what you have to take away from here. ये बेसिक चीज आपको समझना जरूरी है। अगर मैं वेवलेंथ कम करूंगा तो उसकी एनर्जी जो रेडिएशन की बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा एनर्जी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है सेम एज वेवलेंथ कम करना, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इज स्पीड। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सब दिमाग में रखो, ठीक है? ऑलराइट, ऑलराइट। सो कैन यू गो विद द नेक्स्ट पार्ट देन? नेक्स्ट पार्ट प्लीज। दिस इज अ शॉर्टर वेवलेंथ, मोर एनर्जी। ओके, सो इसमें आई डोंट व्हाट आर यू सेइंग पीयूष? या, सो द energy half mv square, the kinetic energy will be given by this, right? HC into 1 by lambda minus this lambda into 10 power minus 9. Same चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। What did I do? I have HC by lambda as energy, right? And जैसा प्रियांशु ने शुरुआत में एक्सप्रेशन बताया था ना कि E minus E naught is going to be equal to kinetic energy, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। This is E, this is E naught, yeah? E naught या फिर phi या फिर phi। अच्छा, P, that's what you're saying, P is phi, yeah, phi, yeah. Got it. Phi या phi. Oh, that's what you were saying. Yeah. So, पीयूष, इसको ग्रीक में PHI लिखते हैं, like phi 5 फॉर्म वाला phi. Yeah. क्या हुआ प्रियांशु? सब लोग बहुत शांत हो गए। थोड़ा सा मैथ्स आता है, लोग शांत हो जाते हैं। आई हैव नोटिस दिस। इज दिस ओके? जो यहां पे लिखा है ठीक है? ठीक लग रहा है? What is the value of kinetic energy here? थोड़ा बताइए। जस्ट सब्स्टिट्यूट तो करना है, अभी कुछ ज्यादा बाकी नहीं है। H और C हमको लिखना है बस। सो यू डू 651
इंटू 500 नीचे, ऊपर 151 बिकॉज दैट इज 651 माइनस 500, है ना। तो इसको 150 ले लो, चलता है। फिर कैंसिल कुछ चीज हो सकती है, नहीं यार कैंसिल करने लायक चीजें हैं नहीं, अब इसको लगता है कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। अगर अगर कैंसिल करने की कोशिश की जाए तो ये 4.500 मतलब फिर 3 हो जाएगा ना, 4.3, 500 में से फिर 3, 4.33 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 4.33 हो गया, और क्या हो गया, और कुछ कर सकते हैं इधर, 3/4.33, 1.44. I don't think we're going anywhere with this. Okay, wow, this is beautiful. Yeah, this is not great. इसको और इसको कट ऑफ करो तो क्या हो जाएगा? It is going to be 4 times approximately. Yeah, 4.5 times actually. Hey, we've got close to an answer. 4.5 by this will give you approximately 9. Approximately 9. Number 9 आ गया। अब देखते हैं 10 पार क्या होगा। 10 पार होगा -34 प्लस 8 प्लस 9, और यहाँ से मैंने ये जो 2 था इसको भी नहीं, इसको भी मैंने हटा दिया था ना, 3 यहाँ से हटाए थे। I made it 0.5, that's why I got 9. So I need to divide by 3, मतलब +3. ओके, ये कितना हो गया भाई? किनेटिक एनर्जी कुछ अजीब लग रहा है मुझे, 9 into something नहीं, किनेटिक एनर्जी हाँ काफी छोटा नंबर लग रहा है, 8, 9, 17, 20. So what I'm getting with my weird approximation is 9 into 10 power minus 20 with very very bad approximation. मतलब ठीक है, 9.2, 9.3 हो सकता है, 8.8 कुछ भी हो सकता है, अप और डाउन इधर वे। क्या हुआ दोस्तों, सब लोग दे रहे हैं थम्स अप बट कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा है। आप लोग कैलकुलेटर से लगता है डर लग रहा है। देखो मैं एनसीईआरटी के सब्जेक्ट पे सवाल कर रहा हूं, आई एम नॉट गेटिंग यू समथिंग आउट ऑफ द सिलेबस, कुछ डरा नहीं रहा हूं आप लोग को, ठीक है। ये तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर अभी नहीं कर पा रहे हो, आफ्टर द सेशन प्लीज डू दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके गुड, दैट्स क्लियर। So with my approximation, I got 9 into 10 power minus 20 joule, which is the same, yeah. 9.2 is the actual value you get. That's the kinetic energy. अब velocity तो बता दो यार, velocity बताओगे? How do you do velocity? Give me the formula of velocity. Tell me the process. If you get kinetic energy as this much, how do I get the velocity? 10 स्टैंड का सवाल है, बता दो। What do you think? How do you do this one? So I've got kinetic energy. What's that? That's half mv square. So v square is going to be equal to the energy times 2 by m. M क्या? 9.1 into 10 power minus 31. Yeah, exactly. 0.5 v square. Yeah, exactly. Piyush. Exactly. So v will be root of this value. 9.2, 9.1 almost cancel हो गया. So look at this. It is not that crazy. You get root 2 into 10 power, ये क्या हो जाएगा? root 2 नहीं हो जाएगा, 10 power 11 का root into root of 10 power 11. Okay. So that is 1.4 into 10 power 5.5. Whatever that is. That's a weird number. Khair. Yeah. थोड़ा और effort लगाना पड़ेगा. What you get is 4.5 into 10 power 5 meter per second. That's the answer right here. Yeah. Let's move on from this. I know I've got you questions that are a little bit absurd, but these are from NCERT. These aren't made by me. I'm not giving you any crazy questions or crazy numbers. NCERT के सवाल हैं. ये करना आपको जरूरी है because NTA ने सिर्फ इस बार बोला NCERT है. ठीक है? आगे बढ़ा जाए। Shall we move on to the next question? Any doubts in the process here? Right? I'll repeat the whole thing. क्या क्या किया? पहले वर्क फंक्शन दिया था, right? Phi. Then your h nu is equal to phi plus ke. Then we said कि अच्छा phi के हिसाब से lambda naught क्या होगा? Lambda naught is you got to be 651 nanometer. Then we said कि इसका lambda is 651 nanometer, right? And then sorry 500 nanometer, मतलब कि कुछ जो है एक्स्ट्रा जो इन दोनों के बीच में फर्क है, which is 1 by lambda 1 minus 1 by lambda naught, उल्टा लिखा मैंने क्या? lambda naught नहीं, सही है, ठीक है, into hc, that is going to be equal to kinetic energy. And then we said कि okay, kinetic energy is half mv square, where e यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास डालना पड़ेगा, is going to be equal to this value right here. So we got all of these things. All right, let's move on to the next question. Please इसको करिएगा। आप लोग जो है इस ऑन चैट कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, दैट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, बट आप लोग को बाद में करना जरूरी है, ठीक है। Emission transition in the Paschen series and at orbit n equal to 3 start from orbit n and can be represented as some value right here. Calculate the value of n. ये तो कर सकते हो, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। If the transition is observed at 1285 nanometer, find the region of the spectrum. Region मतलब कि UV, visible, IR, ये region हो गया। और क्या निकालना है? Find the calculate n value of the transition. ठीक है।
Lyman Balmer Passion, Lyman Balmer Passion Fund. ब्रैकेट भी कहीं पे था ना बीच में, ब्रैकेट पहले था क्या, याद नहीं आ रहा मुझे. इज ब्रैकेट हियर और इज ही हियर, आई डोंट नो. एनीवे, लाइमन बाल्मर पाशन तो पक्का है. या हाउ डू वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, इसको कैसे किया जाए? कैन वी यूज दैट होल रिडबर्ग वाला बिजनेस 1.1 10 पावर समथिंग 7, we can do that, but no, yeah, दिया हुआ है, you don't have to do anything, everything is given in the question. It's given in the question that frequency times this thing. This equation that you see is simply energy being proportional to z square by n square. Since we are talking about the same expression, I mean, we are saying since यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो z must be equal to 1. Looks like it, I mean, or is it already factoring? Yeah, either z is 1 or is already factored in this constant value over here. जो भी है into 10 power 15, इसमें already figured out है z. Okay, L BP Lyman Balmer Passion bracket fund. Okay, that's how I mug it, Priyanshu. That's a nice way. So bracket पहले आता है. Okay, thanks for that. It's a nice way of mugging it. L BP loan pair bond pair huh? Bracket and then fund. Okay, ठीक है, great. Okay, all right. Region is bracket with what is that? Region is bracket क्यों होगा? Region तो Passion होगा ना. N equal to 3 हमें end करते हैं. What does this mean, by the way? This means कि I've got n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5. ठीक है, तो n equal to 1, 2, 3. So wherever they're falling from, they come to the third at the end. Okay, this is the final value of n. They may be coming from 4, 5, 6, 7, कहीं से भी आ रहे हैं. कहाँ से आ रहे हैं ये पहले निकालना है. ठीक है, how do you know you're giving this value? Yeah, Sultana. What is this, Sultana? Try this question out. I can't talk about that one, Sultana. Sorry. इसको करो. This is what we are doing right now. Priyanshu, क्या हुआ? Titraj, cool. 1 by R1 minus 1 by R2. Why R1 R2 would be n square, no? यहाँ तो दिया हुआ है ना. Boss, you have to substitute. सब दिया हुआ है. You have this. I have this. What is this? This is hc by lambda. H nu. That is the energy. है ना? Yes, no, maybe. Yeah. Rather, h कहाँ से है? Sorry. It is simply nu into lambda is equal to c. Okay. So nu is going to be equal to c by lambda. यहाँ पे हमने डाल दिया में c by lambda. H का कोई नहीं है. My bad. I don't know why I talk about h. H वो आता ही नहीं है. It's just an electron falling. Electron ऊपर से नीचे गिर रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है. There is a reason I am drawing this spacing the way I am. Okay. Think about it later. इसकी spacing ज़्यादा है, इसकी कम है और इसकी और भी कम है. ठीक है. So from somewhere it is falling to 3. It's just an electron falling from higher energy to lower energy. High n to low n. ठीक है. सुल्ताना, टेस्ट में था, बहुत अच्छी बात है, बट अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं, है ना? पीयूष, you can ping me on Telegram, Sultana, if you like. I can help you out there. Right now, since you're focusing on this, I'm going to have to do this one right now. ठीक है? On Telegram or on Discord. N4 होगा, says this thing. Okay, let's check. If n is equal to 4, let's check. If n is equal to 4, does it work out? Can we do this from first principle? जैसे हमने बताया, थोड़ा scary लग रहा है, but let's see. I think we can do this. I think we can do this. देखो, 3 into 3 is approximately 9. ये तो 10 हो गया ना. 3 into 3.3 is approximately 10. Okay. So what I have here, नहीं, divide करना पड़ेगा, multiply नहीं करना है. चलो, वो logic गया, छोड़ो. Ditch. Okay. So I've got this whole thing as, if I divide 3 by 3.29, approximately 2.33 आता है. ठीक है. By 3.29 into 10 power 15. Is there any other way to do this? I'm going to leave the RHS as it is because it's annoying. It's some square. No, I don't want to deal with that. I really don't want to deal with that. So I'll leave that as it is. So what we have done is essentially we have divided this by this. Okay. This becomes 1 by 4 approximately. So मैं 2.5 भी लिख सकता हूँ. अगर मुझे बहुत approximate करना है तो मैं 2.5 लिख सकता हूँ. ठीक है. Excuse me. 1 by 4 is 2.5. 2.5 divided by 3.29 is equal to 1 by 9 minus 1 by n square. ठीक है. ये वैल्यू क्या होगी? अगर 5 से मैं करूं, 5 से नहीं हो पाए, 6 से करूं, 6 से करूं नहीं, 7 से करूं नहीं, 6 is too much. 6 is 4 divided by 5.5, which is 8 by 11. Okay, now that's not helping anywhere. That's not helping at all.
Khair, this is becoming a little bit harder than we thought it would. If I get 8 by 11, okay, 8 by 11, what could I possibly do with 8 by 11? Not much. Also, there is a 10 ka factor over here. Yeah, it's not 8, it's going to be 8 by 110, not 11. It's going to be by 55. क्योंकि यहाँ पे देखो 10 power 15 है, यहाँ 10 power 14 है, ठीक है? So there's an extra 10 over here. So what I have is essentially 2.33 divided by 332. मैं इतना भी, yes, please Swati, please use calculator. मैं जितना ड्रामा कर रहा हूँ so that you can use a calculator, give me the answer. हम लोग इतना जो है टाइम पास कर रहे हैं so that you have time to use a calculator. That's what this is for. Calculator use करो भाई, please करो. खैर, use a calculator and you will get this whole thing over here. ठीक है? मैंने approximately 7 by 100 लिखा है, which is the same as 8 by 110. It's the same thing, right? 0.7, if you don't believe me. 8 by 110 is also 0.72. ठीक है? Anyway, this is approximately 1 by 25. N value is going to be 5. ठीक है? और अगर n value 5, it doesn't matter where you start off from. If you're going from n equal to x to n equal to 3, it's going to be in IR. That's how it is. Yeah. Lyman is UV. Bracket, no. Balmer is visible range. And then baki sab IR hai. Yeah, that's how it is. So this is definitely IR. Yes. Thank you, Teepraj. Lovely. Thank you. Thank you. Devanshi, all right. It was close. But see, you do get n equal to 5 over here. Okay. N value is 5 and this is going to be IR. Yes, Pampa. All right. Cool. Let's go on to the next one. Okay. Iska answer to humne kar liya. Okay. This is another one. Next question. Calculate the wavelength for the emission transition if it starts from the orbit having radius something and ends at something else. Name the series to which this transition belongs to and the region of spectrum. Use a calculator. Please use a calculator. Pampa, Sultana. All right. Cool. So you're starting from this and you're going to this. What does this mean? इसका मतलब क्या है? Starting at some value, ending at some value. This lambda is smaller than this guy, which means कि इसका energy is higher. 200 नहीं, गड़बड़ बोला. 200 into 10 power minus 12. That is 2.11 into 10 power minus 14. Yeah, this is 1.32 into 10 power minus 9. So it starts here and it ends here. Okay. What series is this belong to? Can you try this out? Unit, Priyanshu? Unit उसमें थोड़ी ना होगी. It's just n, right? N is 5. Unit का कहाँ हुआ कुछ भी? How do you think we do this one? इसको कैसे किया जाए? Try करो उसको. It's getting intense, huh? बोला था calculator use करो. बिना calculator की life will get a little bit annoying. So please use a calculator. I know you're preparing for NEET, which doesn't allow a calculator, but we are doing subjective NCERT questions. आप ही ने मांगा था इसको. Yeah, and you need a calculator for this. दिमाग में करना मुश्किल है. We tried doing it, थोड़ा मुश्किल है. By the way, ये radius values हैं, ठीक है? This is not wavelength or anything. Just be very careful here. ये radius value है. Radius में क्या है? R is proportional to n square by z. So I have to get n values. That's all. Z I don't need. So if I get n square, कुछ value n square, कुछ value, I get n1 square, I get n2 square, and I need to get n1 and n2. That's all. कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें. Energy gap निकालना है. Thank you, Priyanshu. Absolutely. So you need to know that R0 or the first radius is 0.529 angstrom. बिल्कुल सही बोला आपने. 5.3 भी ले सकते हो. Oh, some weird thing. Oh, I was trying to erase something over here. Was never mind. Yeah. Please try this out. इस सवाल को try करिए. Is this question difficult at all? What do you think? $300 nanometer. Aye? Sultana, let me just rephrase this question if this is getting hard, right? Lambda 434. Okay. I'm trying to follow. हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे? Oh, okay. Oh, you're giving me the second part of the answer. Did I ask though?
कि lambda क्या है इसमें? I'm just trying to see. Name the spectrum. Okay. For the second part, Sultana, what you're saying is right. But how do you get that without the transition? How do you get that without the transition wala business? Can you help me with that? If R is proportional to n square by z, 434 and 10 power minus 9. Sure, Sultana, but that's not what I'm asking for. मैं उससे पहले पूछ रहा हूँ कि series transition कहाँ हो रही है? What you're saying is sure, 431 nanometer मतलब must be visible. But how do you get that? वो कैसे लाए आप? Can you help me with that? How do we get that 434 वाला number? I mean, you can get that if you, if you know कि frequency क्या है, right? And how are we getting that without N1 and N2? I don't understand that. So all you got to do is write radius is this value here, which is 5.29 into n square into 10 power minus 11. ये angstrom मतलब क्या होता है? Into 10 power minus 10, right? So I'll make it 11 into 10 divided by 10. So into 10 will become 5.3 or 5.29, whatever. And divided by 10 मतलब ये 11 हो जाएगा. ठीक है? That's what I've done over here. So I get this by this. ठीक है? Into 100, 10 power minus 11. एक मिनट, 100 था, यहाँ गया, minus 14 हो जाएगा, right? This will be not 10, this will be 14. 9 ठीक है, 9 ठीक है, but this should be 14. 211.6 picometers is equal to into 10 power minus 12, right? So if I divide by 100 and multiply by 100, हाँ सही किया. So 2.11 if I multiply 100 becomes 10 power minus 10 divided by 100. Yeah, okay. This is right. This is ये ठीक है, 10 power minus 10 ठीक है. Okay. So if I divide both of these, what do I get? I get 13 by 2.1, which is 6. No, this is 6, approximately 6. 6 is n1 square by n2 square. Okay, this is weird. So if I do n1 by n2, you know the squares, ना? तो 20 के आसपास होगा. 20 square is 400. 21 square is 424. I'm bad at this. I think कुछ है something like this. So approximately 25 square is what I know is 625. Okay, and this happens to be exactly 6.255. So you get this value, you get n1 by n2 is 2.5 because the root of this, right? 25 ka square and n1 is 5, n2 is 2. This is one possibility. One possibility. The other possibility is n1 is 10 and n2 is 4. That is also possible, but let's ignore that possibility for now. Okay, let's take the simplest possibility right now. Balmer visible. Okay. Sultana saying that. Yeah. Someone saying no. 441 says Priyanshu. All right. Good job. Yeah. So this is definitely Balmer and definitely visible. That 434 wala part is not necessary in this question, but sure, I think you will get that if you do something like 1.1 into 10 power 7 into 1 by iska kya tha? N1 square was 2 square minus 1 by 5 square is equal to 1 by lambda. So with this you do get 434 nanometers, but that's not been asked in the question. हमसे पूछा है कौन सा series? अगर if the final n is equal to 2, then it's definitely Balmer series, ना? Which we know is visible range. So you don't need to calculate that as such. ठीक है? Shall we go on? Did this get to be too much? ज़्यादा हो गया क्या? बताओ मुझे if this is getting to be too much, huh? Shall we go on to the next question? Yeah. But this time is okay, right? The 4:30 p.m. time is okay. Yeah, better than 1 p.m. time. Let me know. If the position of electron is measured within an accuracy of 0.002 nanometer, calculate the uncertainty in the momentum of the electron. Suppose the momentum of the electron is this value. Is there any problem in defining this value? इसका क्या मतलब है? सोचो, try करो. Try this out. Try this question out, please. I have just one more question इसके बाद. Let me call it a day. एक छोटा सा सवाल on the whole SPDF वाला business, and then we'll call it a day. इसके बाद एक और सवाल है. Calculation है, I know. थोड़ा calculation है, but यार मैं NCERT का subject पे सवाल कर रहा हूँ. I'm not picking anything fancy. बड़ी book कोई नहीं उठा रहा हूँ. Just doing basic NCERT stuff. Nothing crazy. What is uncertainty principle? Yeah, what do I need to start this question? I say delta x into delta p is greater than or equal to h by 4 pi. मतलब the error is going to be greater than h by 4 pi. Error in what? Error in measuring position and error in measuring momentum.
ठीक है, इन दोनों को जो है मेजर करना ऐसा होता है. हाँ, so this, out of this, P is m times delta V. What do I have here? I know this value, nanometer में है. What is this value going to be? That's all that's being asked for. Yeah. Minimum is h by 4 pi. I like how you guys write pi. Pi for pi. All right. So delta P is going to be greater than or equal to 6 into 10 power minus 34 by 4 pi into this value. What is this? This is 2 into 10 power minus 3 nanometer, which is 2 into 10 power minus 3 into 10 power minus 9. 2 into 10 power minus 12 is what you get. वही मैंने यहाँ पे लिखा है. Calculator निकाल लो please. When you do this calculation, you get that delta P is greater than or equal to some value, some very small value, 10 power minus 23. Now, the next part of this question is interesting. So it says h by 4 pi into 0.05 nanometer is the momentum. This is the actual P value. So the actual P value, this is actual, right? The actual P is h by 4 pi into 5 into 10 power minus 11, similar to this. Yeah. 0.05 nanometer, matlab 5 into 10 power minus 2 into 10 power minus 9, which is 10 power minus 11. That's what I've done here. Okay. That value comes out to be this. Now look at this. This is crazy. This value is right here on my left is smaller than the error. Much smaller, 10 times smaller. This is 1.05, 20 times smaller. Yeah. If I divide this value by 20, then I get 1.31 into 10 power minus 24. उससे भी छोटा. It is smaller than 20 times. So it's not going to work. Okay. I cannot measure its momentum. I cannot measure the momentum. So this is not possible. I cannot find out its momentum. This was a takeaway from this question. Error का मतलब क्या होता है? हाइजेनबर्ग भाई साहब ने कहा कि अगर मैं बहुत एक्यूरेसी से पोजीशन को डिफाइन कर रहा हूं, मैं मोमेंटम एक लेवल तक ही डिफाइन कर सकता हूं. And this is beyond that error of measurement. So there is no way for me to know. This is not possible. या तो मैंने either if I'm measuring delta x by that precise thing, I cannot measure momentum. That is the takeaway from this. Okay, because the error is greater than the value of the momentum itself. Wonderful question. इसलिए मैं ये वाला आपके पास लेके आया. Otherwise, this seemed like a very basic and easy question, and we haven't done too many questions on Heisenberg's uncertainty principle. I realized that last time भी नहीं किया था. तो इसलिए इस सेशन में मैंने इन कुछ बेसिक आइडिया से फोकस किया. खैर, let's do the last question for the day. Last question for the day. This doesn't work. Okay. Last question for the day. The quantum numbers of 6 electrons are given below. We need to arrange them in order of increasing energies if any of these combinations has or have the same energy list. Okay, we can just, I feel like कुछ question आधा अधूरा हो गया. देखते हैं पूरा सवाल क्या था. 2.62 इसके बाद भी कुछ सवाल था क्या? Some part looks like नहीं, that's it. That was the question. I feel like अंग्रेजी थोड़ी अजीब सी है, but ठीक है. No judgment, whatever. We'll figure it out. Let's arrange them in the highest energy first. ठीक है. And I know two of these values are exactly the same, right? Like say 3 and 6 are the same. I noticed that. I didn't change it because NCERT में exactly ऐसा दिया, तो like okay, we'll leave it, whatever. How do you arrange them in the order of increasing energies? N plus L values. If N is same, if same, then higher N value is higher energy. That gets preference. ठीक है? लिख ले इसको, कैसे करें? Schrodinger, N plus values. Yes, Priyanshu. Actually, yeah. Can we do this? Can we try this? अगर सूर्या भी है, we can go revisit the first question. I don't think Surya is here though. Surya, if you're here, tell me. We can revisit the first question after this question. So here N plus L is 6. Here it is 5. Here it is 5. Here it is 5. Here it is 4. Here it is 5 again. So out of these, it is very clear that this is the highest energy. Okay. बाकी में तो देखना पड़ेगा. बाकी are all 5. What are these orbitals? Shall we write them down? Let's write them down. 4d, 4 and L, मतलब D, right? S, P,
DF. L values are 0, 1, 2 and 3. So this is 4D इसलिए. This is 3D, same reason because L value is 2. 1 है तो 4P हो गया. So then is 4, 3D, 3P, 4P. Okay. Now out of this is for sure 1. But out of all of these, बाकी सबका 5 है. 4P is same. 3D भी 2 बार आ गया. अच्छा 3D भी 2 बार आ गया. ठीक है यार. But 3D 2 बार आ गया है. But these are degenerate. Okay, let's talk about this for a second. What about question option 2 and 4? You got 5 of them. And you've got 1 electron in 0, hold on, minus 2, minus 1, 0, 1 and 2. So if I have something in minus 2, which is this electron, 1 क्यों बना दिया, and you have another electron in 1, they are the same. They're the same, degenerate electron. You say they're the same, so doesn't matter. We're not considering splitting crystal field, वो सब कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, वो हटा देते हैं इसको. Let's move these. So this is 1, and फिर 2 कौन सा होगा? फिर 2 होगा this one, because n plus l value is same, but n value is higher. This should be 2, and then this should be 3. Both of these are 3. ये वाला होगा 4. Correct? Yeah? Yeah? 1 is the highest, 5 is the lowest. बिल्कुल सही बोला. 1 is the highest and 5 is the lowest. और बाकी बीच में आपने फिगर आउट कर लिया. Yeah? Cool. किसकी प्रियांशु? I missed the chat, sorry. Yes, Priyanshu, what are you talking about? 2 and 4 are same. Yes, 2 and 4 are same. Let me use a different color to show the same ones. 2 and 4 are same. And 3 and with a plus sign, 3 and 6 also are the same. Okay? This is a random thing I'm doing here. 3 and 6 are also exactly the same. Cool. Yeah. 5 is lowest, 1 greater than 6 equal to 3. Okay, lovely. I like that. Khushnuma, very elegantly writing here. Thank you, Khushnuma. 1 is greater than 6 equal to 3, and that is greater than 2. Okay. 1 is greater than 6 equal to 3. Okay, then 2. Okay, let me write down. 1 greater than 6, which is equal to 3. Then, which is greater than 2 equal to 4, which is greater than 5. Yes, I agree with Khushnuma. Wonderful work. What do you guys think? Do you agree with Khushnuma? Excellent. I like it. You're all brilliant. ठीक है. With that, we are done with today's set of questions. Yeah. Thank you so much for your time. मजा आया क्या? Was that all right? कुछ भारी नहीं हुआ ना? We are doing okay. ठीक है? Let me write that down here. 1 greater than, खुशमा लिखा था वही लिख देते हैं. 6 equal to 3, greater than 2 equal to 4, greater than 5. Yeah? All right. ठीक है. So, मेरे पीछे आ गए. I'll see you again on Thursday. We'll do periodic table. And मुझे लग रहा है आप लोग कैलकुलेटर से डर रहे हैं. Get used to the calculator. अगर नहीं है तो यार ले लो कैलकुलेटर. I know आप लोग बोल रहे हैं यार मेडिसिन में कैलकुलेटर यूज करो. It's okay यार, कैलकुलेटर यूजफुल है. Get it until you're doing this whole NEET वाला business. उसके बाद नहीं यूज करना, मत यूज करना. This is my calculator from college. Like literally. देखो इसमें स्टिकर भी लगे हैं कॉलेज वाले. OnePlus मैंने फोन खरीदा पता नहीं कब, फिर एक जो भी है. Very old calculator. FX991ES. So 10 साल से ज़्यादा पुराना कैलकुलेटर. रहता है यार कैलकुलेटर लास्ट. Anyway, thank you all for your time. As always मुझे मजा आता है आपको पढ़ाने में. हम लोग मिलेंगे अगली बार फिर से थर्सडे को सेम टाइम 4:30. ओके, प्लीज टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस इफ यू एंजॉयड द सेशन. मिलते हैं हम लोग. पीरियोडिक टेबल करके आना कोशिश. बाय, सी यू अराउंड, टाटा. If you guys want test series and stuff, you can go to shop.byju's.com. Yeah, that has all that. Links in the description. Okay, see you. Bye.